Good evening, children. Good evening. I am going to continue the chapter. The name of the chapter is Lifelines of National Economy. Now, in the previous class, we have studied certain topics, such as we have studied what topics we have to study. The first option was means of transport, pipelines, waterways and seaports, airways and communication, international trade and tourism. Now, if I talk about the means of transport, so you will see the earth is endowed with three important domains. One is land, the second one is water, and the third one is air. So firstly, we are going to study about land. Now, in the land, three kind of things comes. That is the roadways, railways and pipelines. So in the previous class, we have studied about roadways. Today, I am going to begin with railways and pipelines. Now, if I talk about railways, then what's the first point? The Indian Railways is the largest public sector undertaking in the country. The first train ran from Mumbai to Thane in 1853. It covered a distance of 34 kilometers. The railways are regarded as the main sector or the main artery to inland transport in India and is the principal mode of transport for freight and passengers in India. Large scale and long distance movements of people and goods take place throughout the railways. और अभी भी रेलवे डिपार्टमेंट हमारा एक ऐसा है, अगर हमको कहीं भी दूर जाना है, दूर जाने का मतलब लखनऊ से कन्याकुमारी जाना है, लखनऊ से वैष्णो देवी जाना है, किसी भी दूर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेन को ज़्यादा सेफ माना जाता है. पीपल प्रेफर टू ट्रैवल थ्रू ट्रेन इन कंपैरिजन टू रोड्स. रेलवेज वो फर्स्ट, देखो सबसे पहले रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी? रेलवेज वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड in the year 1853 and by 1947, the years of Indian independence, they had grown to 42 different rail systems. तो सबसे पहला जो रेल का सिस्टम था 1853 में स्टार्ट हुआ और इसका जो डिस्टेंस था, it was covering the distance of 34 kilometer. जो एरिया था, जो डिस्टेंस था, दैट वाज फ्रॉम मुंबई टू थाने. मुंबई से थाने जाने के लिए था. 1853 में स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड द डिस्टेंस वाज ऑफ 34 किलोमीटर्स ओनली. सो एज यू कैन सी, large scale and long distance movements of people and goods take place through the railways. लोगों को जाना है, सामान कहीं पे भेजना है, तो उसके लिए सिर्फ हमारी रेलवे ही काम आती है. Railways were first introduced in 1853 and by 1947, the year of independence, they had grown to 42 different rail systems. और 47 तक, 1947 तक, they have grown to 42 different rail systems. In the year 1951, अगर 1951 पे हम लोग बात करते हैं तो the whole system was nationalized. The whole system was nationalized as one unit. इस पूरे रेलवे सिस्टम को एक यूनिट माना गया था. To become one of the largest networks in the world. भारत का जो रेलवे डिपार्टमेंट है, that is one of the largest networks in the world. For administrative conveniences, देखो एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से मेंटेन हो सके, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 18 जोन्स. इंडियन रेलवेज को 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है. जो करंट रेलवे जोन है, द करंट रेलवे जोन्स with their headquarters
I'm just going to tell you the railway zones with the headquarters. सबसे पहले हम लोग रेलवे जोन्स की बात करें तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट नॉर्दर्न रेलवे. नॉर्दर्न रेलवे एनआर जिसे हम लोग कहते हैं. नॉर्दर्न रेलवे इट्स हेडक्वार्टर इज दिल्ली. नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, दैट एरिया, द हेडक्वार्टर इज इन गोरखपुर. देन द थर्ड वन इज नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी. ईस्टर्न रेलवे कोलकाता. साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता. देन कम्स साउथ सेंट्रल रेलवे, द हेडक्वार्टर इज एट सिकंदराबाद. देन लेट्स टॉक अबाउट सदर्न रेलवे चेन्नई. सेंट्रल रेलवे मुंबई. वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट. साउथ वेस्टर्न रेलवेज हुबली. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज जयपुर. वेस्ट सेंट्रल रेलवेज जबलपुर. नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज इलाहाबाद. और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज बिलासपुर. ईस्ट कोस्ट रेलवेज भुवनेश्वर. ईस्ट सेंट्रल रेलवेज हाजीपुर. मेट्रो रेलवे कोलकाता. और साउथ कोस्ट रेलवे दैट इज विशाखापट्टनम. लेकिन हमें इतने सारे याद नहीं करने. वी डोंट हैव टू लर्न द एंटायर zone headquarters. Just remember that, children. For administrative convenience, Indian Railways have been divided into 18 zones. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 18 zones में इसको divide किया गया है for the proper administration. Now, in addition to being an important means of transport, देखो हमारे यहाँ भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवेज जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इट हैज बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ आवर कंट्री फॉर द पास्ट 150 ईयर्स. पिछले लगभग 150 सालों से रेलवेज आर द बेस्ट. रेलवेज आर रूलिंग ओवर इंडिया. इट हैज बीन एबल टू कनेक्ट फार फ्लंग प्लेसेस एंड हैज ब्रॉट पीपल क्लोजर टू ईच अदर. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो अब कोई भी दूरी, अब हमारी ट्रेनें लगभग पूरे भारत में कहीं भी चली जाती हैं, तो लोगों के इसने दूरियों को घटा दिया है. और जो दूर दराज की जो एरियाज़ हैं हमारी, जैसे लखनऊ से कन्याकुमारी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो यहाँ पे अब हम आसानी से पहुँच सकते हैं. नाउ इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. और लंबे से लंबा डिस्टेंस 800 किलोमीटर 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर ले रही है इन अ वेरी ईजी मैनर. At present, Indian Railways have 3 different gauges. सबसे पहले बताते हैं what do you mean by gauge? Can anyone tell me what is the meaning of gauge? I am waiting for a response. Define gauge. Gauge का क्या मतलब होता है? Anyone can tell? आशी, अवस्थी, अनुष्का, जानवी, any child? Misty, Priya, define gauge. Just tell me. Yes, children, I am waiting for a response. Any one of you tell me the definition. Priya Yadav, Janvi. Okay, right answer given by Shlok Khare. Now let me tell you, it has been able to connect. Now if I tell you about gauge, a gauge is the distance. A gauge is the distance between two metal rolls. A gauge is the distance between two metal rails on which the wheels of the locomotive roll or run. Okay, so again I am repeating, a gauge is the distance between two metal rails on which the wheels of the locomotive roll or run. It conforms to 3 different standards. It conforms
to three different standards in India. Railway network distribution in our country is dependent on many factors. देखो रेलवे की अगर हम लोग बात करते हैं रेलवे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो ये तीन चीज़ों पे निर्भर करता है. कई सारे इसके फैक्टर्स हैं जैसे कि पहला फिजियोग्राफी, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. Three factors are there. First one is physiography, second one is economy, and the third one is administrative factors. See, the Indian railway network runs on multiple gauge operations extending over 66,687 kilometer excluding Metro Kolkata. इसमें इन्होंने मेट्रो कोलकाता को काउंट नहीं किया है. दिस इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, यू कैन सी टू इट. सी द लेवल एंड एक्सटेंसिव नॉर्दर्न प्लेन्स with high density of population, high industrial activity and rich agriculture favor development of railways. However, the wide rivers that flow here cannot be crossed without bridges. देखो जितनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ देश में कई सारी नदियाँ हैं तो नदियों को क्रॉस करने के लिए for crossing the rivers here it cannot be crossed without bridges which becomes an additional cost for railways. तो ये बहुत बड़ा एक एडिशनल कॉस्ट होता है रेलवेज के लिए. कहीं भी ट्रेन जानी है, मेट्रो स्टेशन होना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं नदियों पे और उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. एंड इट टेक्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम टू मेकिंग एनी काइंड ऑफ ब्रिज. सी द सेकंड पॉइंट इज the high relief sparse population and lack of economic opportunities in the Himalayan region create unfavorable conditions for laying the railway lines. Frequent landslides and rockfall are additional problems. देखो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे कुछ कमियाँ आती हैं. हर जगह तक आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, वहाँ पे जनसंख्या कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है. मैं हिमालयन रीजन की बात कर रहा हूँ. वहाँ की कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए. तीसरी चीज़ माउंटेन स्लाइड्स होने लगती हैं, मतलब पहाड़ खिसकने लगते हैं. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये एडिशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो है ही, साथ में these all natural problems also create a lot of disturbance, lot of chaos for making the railway lines or the railway tracks. Next point is the peninsular region. The peninsular region with their hilly terrain also make it difficult to railway tracks. In such areas, railway tracks have to be laid through low hills, gaps and tunnels. देखो जहाँ पे पहाड़ हैं, जहाँ के जो टर्न्स है वो बड़े कर्व वाले हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में. अच्छा, रेलवे ट्रैक को वो जो नीचे वाले पहाड़ होते हैं, लो हिल्स होते हैं, वहाँ से लेते हैं, गैप्स के बीच में से लेते हैं, उनके लिए अलग से टनल्स निकाली जाती हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दीज देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. मेरा अगला पॉइंट है द peninsular regions with their hilly terrain also make it difficult to lay railway tracks. In such areas, railway tracks have been laid through low hills, gaps and tunnels. ये हमने पॉइंट फिर से पढ़ा. नेक्स्ट पॉइंट इज द low flood plains जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है, Assam and Bihar. Two areas, the low flood plains of Assam and Bihar, where floods are common. इन दोनों जगहों पे असम बिहार में फ्लड जो है वो बड़ी आम चीज़ है. पोज डिफ़िकल्टी, यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टी होती है रेलवे लाइंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर
पानी का जो फ्लो है, पानी ज़्यादा अगर भर जाएगा तो रेलवे ट्रैक्स आपको दिखाई नहीं देंगे. जस्ट नाउ वन क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड बाय प्रिया यादव, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड रनिंग ट्रैक. देखो रूट होता है, इट इज़ यूज फॉर रोडवेज ऑल्सो, और जो रनिंग ट्रैक होता है, रनिंग ट्रैक मतलब जैसे कोई ट्रेन चल रही है, ट्रेन लखनऊ से दिल्ली जा रही है, तो जिस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है उसको हम लोग कहते हैं रनिंग ट्रैक. दैट इज नोन एज रनिंग ट्रैक. अदर एरियाज जहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में, बिकम्स डिफिकल्ट आर द सैंडी प्लेन्स. देखो जो बालू वाला एरिया है वहाँ पर भी दिक्कत है. आर द सैंडी प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, फॉरेस्ट एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड, एंड द स्वैम्प्स ऑफ गुजरात. मतलब राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन लेइंग द रेलवे ट्रैक्स. नाउ अगर हम as I told you just now that there is a lot of problem in laying the railway tracks in Rajasthan. तो मैं राजस्थान की थोड़ी बात करते हैं. Deserts of Rajasthan and the hilly tracks of the Sahyadris were unfavorable for development of railways. Earlier, the stretch of Sahyadris could be crossed only through gaps and passes. जो Sahyadris थे उसको हम लोग क्रॉस केवल गैप और पासेस से कर पाते थे. This economically important zone now experiences the movement of passengers and goods, which has been made possible by the development of the Konkan Railway. और ये पूरा क्रेडिट जाता है, the entire credit goes to Konkan Railways. अब इसका बेनिफिट क्या है कि पहले जहाँ पे पहुँचना मुश्किल था, अब वहाँ पे कोंकण रेलवेज की हेल्प से रेलवे ने बहुत इजी कर दिया है. देयर द ट्रांसपोर्टेशन, द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैव बीन मेड वेरी ईजियर. अभी यहाँ पे बहुत आसान हो गया है. पहले इट यूज टू क्रिएट ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अच्छा, प्रॉब्लम्स यहाँ पे कैसी आती थी? बट दिस वॉज ऑल्सो नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक्स. अभी भी क्या होता है, कई बार जो ट्रैक्स होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं. लैंडस्लाइड्स होती हैं, ज़मीन खिसकने लगती है, और जब ज़मीन खिसकती है तो क्या होगा, जो आपका रेलवे ट्रैक है उसकी भी डायरेक्शन चेंज होने लगती है. सो ऑल दीज आर ग्रेट प्रॉब्लम्स, ऑल दीज आर ग्रेट ट्रबल्स फॉर द रेलवे डिपार्टमेंट्स. नाउ जस्ट नाउ आई हैव टॉक्ड यू अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रेलवेज, कि हमें इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, what are the problems which the railways are suffering from. कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिससे रेलवे जूझ रहा है. So children, though railways are important in our national economy, rail transport suffers from many problems. कई सारी दिक्कतें हैं और आधी दिक्कतों के कारण हम ही लोग हैं. We people are the root causes of all these problems, like टिकटिंग ट्रैवलर्स, टिकटलेस ट्रैवलर्स. सबसे बड़ी चीज़, लोग बिना टिकट के ट्रेनों में चढ़ जाते हैं. मैनी पीपल ट्रैवल विदाउट टिकट्स. अच्छा, जो लोकल्स होते हैं, जैसे आपको अगले स्टेशन पे उतरना है, आप चारबाग से चढ़ते हो, आलमनगर पे उतरना है आपको. लोकल मतलब एक एक स्टेशन वाले, दोज पीपल डोंट परचेज द टिकट्स. तो ऐसे जो डब्बे होते हैं वो हमारे भर जाते हैं और ट्रेनें जो होती हैं वो काफ़ी नुकसान में जाती हैं. Many people travel without tickets. This causes loss of revenues. अगला point, thefts and damages. Anti-social elements often steal things such as bulbs, handles, etc. देखो ट्रेन में लोग चलते हैं, उसमें भी लोग चोरी से नहीं छोड़ते, बल्ब निकाल लेते हैं, हैंडल निकाल लिए, कई बार तो आधे लोग पंखे ही निकाल लेते हैं. अच्छा, गद्दी जो होती है, सीट जो होती है जिस पर हम लोग लेटते हैं, उसको भी कुछ लोग डैमेज करने की कोशिश करते हैं. जो चार्जर पॉइंट्स होते हैं उसको भी लोग नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको भी निकालने का प्रयास करते हैं. और यहाँ तक कि जो नलके होते हैं उसमें, उसको भी लोग निकाल लेते हैं. सो दीज आर द थिंग्स. एंड द लेटेस्ट, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो कई ऐसे हमारे एरियाज़ हैं, नक्सलाइट बेल्ट्स जो हैं
नक्सलाइट एरियाज, वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं जिसे हम लोग पटरी कहते हैं, लोग वहाँ से पटरी काट लेते हैं। पटरी काटने का नुकसान समझो, लोहे का जो रेट होगा वो तो होगा, आपने कबाड़ में ही बेच पाओगे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, इट गिव्स शेप टू वेरी हार्श एक्सीडेंट्स। अगर बीच से पटरी काट दी जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस मैक्सिमम है, एंड इन दैट thousands of people are going to be killed. So such kind of thefts and damages are one of the root causes due to which rail transport suffers. The next point is chain pulling. एक ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, बहुत मतलब मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, दैट इज चेन पुलिंग. At times people pull the chain unnecessary which leads to delay in train. जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपका एरिया पड़ा, आपका गांव या आप जहाँ भी आपका नेटिव प्लेस है वहाँ पे स्टेशन नहीं है, तो आपने क्या किया, चेन पुलिंग कर दी, चेन खींच दी. अब देखो चेन रखी क्यों जाती है ट्रेन में? कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग द चेन? जस्ट टेल मी द आंसर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ chains in train? Just send me the answer, children, fast. Send me the answer fast, children. सिद्धा, सिद्धांत, मिष्ठी, श्लोक, जानवी, अनुष्का, पारुल शाह, कुशाग्र, श्लोक. Send me the answer, children. You people also. Only Priya Yadav has sent me the answer. Very correct answer has been given by. Okay. To stop the train immediately. Stop the train immediately means कि अचानक कुछ हो जाता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट फेल हो गया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो सडन ट्रेन में चेन पुलिंग कर दी जाती है, जैसे कि फॉर दैट वी कैन सेफ गार्ड दैट पर्सन, उस इंसान की हेल्प की जा सके. लेकिन होता क्या है ना, व्हाट द पीपल डू, जैसे आप जा रहे हैं कहीं पर और आपका घर पड़ता है या आपका नेटिव प्लेस पड़ता है, आप स्टेशन तक जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा, तो लोग क्या करते हैं, चेन पुलिंग कर देते हैं. चेन ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, पुलिस वाले जो रेलवे डिपार्टमेंट होता है आके देखता है क्या प्रॉब्लम है, और जो उतरने वाले लोग होते हैं वो अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, वो उतर के वहाँ से चले गए. लेकिन ऐसे लोगों की वजह से, जस्ट ड्यू टू दीज काइंड ऑफ पीपल, जो ट्रेन का जो टाइमिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ट्रेन पहुँचती थी 10 बजे, पहुँचती है 11 बजे. Such kind of problems are there. Just for the convenience of their own people, for their own convenience, they apply such kind of things. They do the chain pulling. Actually, chain is meant for right answer given by Shlok and Pratyush. Shlokra has given. These are there which are connected from brakes. So they are used to stop the train immediately in any emergency. अब इसमें लोग क्या करते हैं, जिसको जरूरत पड़ती है वो रोक लेता है अपने ट्रेन को. Whosoever is in a need, it just stops, it just does the chain pulling, और नुकसान सबका हो जाता है, उसमें टाइम वेस्टेज होता है. Now let's move to other point. अच्छा, इससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लें, the important points. Just tell me the answers, children. कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर बताना, just meanings. I'm just typing the first word. What is the meaning of the word hinterland? What do you mean by hinterland? Yes, children, tell me the answer fast. The word is hinterland. Hinterland. Hinterland.
Okay, no one is telling, so I should tell you the answer. If anyone knows, send it. See, the word hinterland means, it means, yes, right answer. Okay, right answers have been given by S.St and Tanishq Gupta. Now let me tell you the answer. Hinterland means the remote areas of a country from the coast or the banks of major rivers. That's the answer. Now, the other question. It is an easy one. What do you mean by exports? The word exports means these are the goods and services produced in one country and purchased by residents of another country. Okay, now the next question is, what do you mean by super highway? Answer this question. What do you mean by super highway? Answer it fast. Super highway. Okay, Tanishq, roads connecting major cities. Anybody else? Siddhant, Priya, Pratyush, Shlok. Okay, let me tell you the answer. Super highways, it means a multi-lane highway designed for high speed traffic. Good answer, Siddhant. Your answer is correct. A multi-lane highway designed for high speed traffic. Okay, now the next question for you is, my next question is, what do you mean by mega city? What is the meaning of the word mega city? And children, all of you try to give the answer. No problem, the answer can be wrong. So no problem is there. Yes, children, answer for mega city. Okay, Priya and Siddhant, the answer is right. A very large city, typical one, with a population of over 10 million people. जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, 10 मिलियन से ज़्यादा होती है. देखो 10 मिलियन से ज़्यादा है तो ऑब्वियस थिंग है कि यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा. Large city, large population, it means the traffic. So it is known as mega city. Now the one word is gorge. My one word is gorge. The word gorge means it is defined as the clear minimum perpendicular distance between the inner faces of two rails. Now, थोड़ा सा recapitulate कर लेते हैं हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं. First point is efficient means of transport is prerequisite for fast development of the country. Next point is transport, communication and trade are complementary
to each other. Now the next point is India has one of the largest road networks in the world, aggregating to about 54.7 lakh kilometer. In India, roads are classified in 6 categories according to their capacity: Golden Quadrilateral, Superhighway, National Highway, State Highway, District Roads, Other Roads, and Border Roads. Next point is roads can be classified. Roads can also be classified as metalled and unmetalled roads on the basis of the type of materials used. In India, railways are the principal mode of transportation for freight and passengers. The distribution pattern of the railway network in India has been largely influenced by physiographic, economic, and administrative factors. The Indian Railway is now reorganized into total 18 zones. Okay. Now children, let's move to the MCQ. It's time for the MCQ. Okay, all the children are ready for the MCQ. Now let's move to the question. Now the first question. Children, you can see the question is going to be visible on your screen. So be ready. Today I am going to have nearly 5-6 questions. Okay, the question which is visible. Okay. Okay, children, right answer. Now let's move to the other question. Okay, children, now let's move to the other question. My other question is, now see this question. Question number 27. The answer is right. मेरा अगला सवाल है, which one of the following is not an advantage of pipeline transportation? Pipelines are used for transporting crude oil and gas from fields to refineries. Solids can be transported in slurry form through pipelines. Pipelines rule out transshipment losses or delays. Initial cost of laying a pipeline is high. Children, see this question.
Others also send your answers. Okay, children. The correct answer is option D. Initial cost of laying a pipeline is very high. So the correct answer is option D. Okay. The next question. Now the next question is, which of the following regions is suitable to construct railway lines? Himalaya mountains, Garo Khasi and Jaintia hills, the northern plains or the Rajasthan desert? Send the answer. Read the question carefully and then give your answer. Think and then give. Okay, children. The correct answer is Northern Hills. That's the right answer. Yes, right answer is option C. Now the next question. The Konkan Railway. The question would be soon visible on your screen. The Konkan Railway has connected places situated along the east coast of India, in the Himalayas, in the west coast of India, in the northeastern region of the country. Konkan Railway. Okay, children, let's move to the answer. The correct answer is option C. Option C is the correct answer, along the west coast of India. Okay, now the next question. Narrow gauge railway line is found in northern plains, the hilly areas of Darjeeling, Shillong and Ooty, deserts of Rajasthan, the central highlands. Now send the answer. Again read the question, think and then answer. Other children also send your answer fast.
Okay, now let's move to the answer. The correct answer is option B. Good. The hilly areas of Darjeeling, Shillong and Ooty is the right answer. Good. Those who are giving the right answer and others also try to give the answer, those who are not responding. The next question. The width of the broad gauge railway track is 1.76 meters, 1.67, 1.87, 1.97 meters. Give the answer. Yes, children, the correct answer is option B, that is 1.67 meters. Now let's move to the last question of today. Last question is, which one of the following is the oldest port of eastern coast of India? Options are Kolkata, Vishakhapatnam, Tuticorin, Chennai. Now tell me the answer. Send the answer fast, children. Okay, children. So the right answer of this question is Chennai. The correct answer is Chennai. Okay, children, right answer. And that's all for today. In the next class, we'll be doing the remaining part of the chapter. Till then,